Okay, so before we start the actual video, I just wanted to lay down the bullet points of what I'm going to do in the video forward. So we are talking about savings account. So there are basically 4 points. First, why do we need a savings account? Second, which banks give how much interest and where you can put it. Third, how much money you should keep in your savings account. And fourth, what are the taxes related to it. Enjoy the video. हेलो, आई एम प्रज्वल एंड वेलकम टू मिडिल क्लास फाइनेंस। आज हम सेविंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली सेविंग्स अकाउंट। सो इन द ओल्डन डेज अगर आपको सैलरी मिलती थी, यूजुअली इट इज़ इन कैश इटसेल्फ। नाउ डेज कॉर्पोरेट्स आपके सैलरी अकाउंट बना देते हैं, डायरेक्टली वो जो सैलरी रहती है वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। बट देन ऑल्सो you can open a second savings account or a third, or if you're not in a job right now, if you're doing freelancing work, or for example if you're getting pocket money. I started getting pocket money from like when I was in 11, so I opened a savings account back then, and my dad used to directly put my money into that. So we can use a savings account for various purposes, for everyday use, for getting salaries, or for emergency fund also. I'll get back to that later. So a savings account is basically your piggy bank. Imagine if you are getting your money in cash and you are keeping it in your house. There are many factors and many reasons things might go wrong, and the major, I would say, financially, is that inflation will definitely eat into it. For example, last month in March, the inflation was close to 7%. Now imagine if you have 100 rupees in cash at home. At the end of the year, your money, rather than staying 100, its value will decrease. उसके value decrease हो जाएगी by 7 rupees, and you will have 93 rupees. So for example, अगर last time अगर आप 5 वड़ा पाव ले सकते थे 100 रुपए में, तो मे बी ये टाइम 4 ले सकते हो. So that is one of the major reasons कि आप घर पे क्यों नहीं कैश रखना चाहिए. You should keep it एक कम से कम जितना मिनिमम को नेसेसरी हो. एंड अभी तो मेजरली सब जगह UPI एंड QR कोड स्कैन हो जाते हैं, so you don't really need cash. So why do we need a savings account? Savings account can provide you with better returns. I won't say great, but a little better than having it in cash. So typically, if you see, for example, if you see HDFC Bank, they provide 3% returns saving on your savings account. ICICI provides the same. Kotak, जितना मैंने स्टडी किया है, लाइक इन नामी बैंक्स में कोटक का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है 3.5%, एंड यूनियन बैंक इज लाइक 2.9%. सो व्हाई एम आई यूजिंग दिस नेम्स? मैंने पर्सनली ये चारों बैंक्स के सर्विसेज एक्सपीरियंस किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं यही 4 बैंक मेंशन कर रहा हूँ. देयर आर एक्स नंबर ऑफ बैंक्स. आप जाके रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है. So what happens when you put money into a savings account? For example, if you're putting 100 rupees, at the end of the year, depending on the interest rate, for example, if it is Kotak, it will become 103.5. So it is not, I would say, it is not a great return, but it is still better than having your cash at home. So in that way, it provides a little bit of comfort, little bit of return, not much. And also, अगर घर पे चोरी वगैरह हो जाती है, so that's another thing, so that your money is safe. So since we are in savings, now I will say like how much money to put there, especially कितना पैसा रखना चाहिए. Usually you should keep like एक month का expense. Like I usually keep, like मेरे को 5 से 6 हज़ार लगते हैं, so I usually keep that much amount in my savings account because it is offering a very less return as compared to, for example, stocks ले लो या mutual funds ले लो. So there is no use of putting your money there. You can invest your money elsewhere. You can use savings account just like a wallet जैसा आप यूज कर सकते हो कि इसमें पैसे है, आपको खर्च करने हैं, जस्ट रख दिए. रिटर्न्स तो इट्स लाइक अनदर थिंग. यू आर नॉट रियली ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट फॉर रिटर्न्स. लेकिन उसमें से भी, एज आई मेंशन, अगर इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स ऑन सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो, Kotak Bank is one of the best interest giving. There are other banks also like IndusInd and RBL, but I don't know how much I trust their credibility. Then how much money you should put? If you didn't know this,
आपका जो सेविंग्स अकाउंट रहता है या बैंक में जो आपका एक अकाउंट रहता है, वो सेविंग्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, आरडीज, they are all insured. So they are insured by DICGC, which is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, which is a wholly owned subsidiary of RBI. So ये इंश्योरेंस क्यों है? इन केस अगर बैंक कल डूब जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपका जो अमाउंट था, जो इंश्योरेंस अमाउंट, विच इज नाउ 5 lakhs, इन द पास्ट इट वॉज 1 lakh 2 lakhs एंड अभी इंक्रीज होकर 5 lakhs हो गया. तो जो 5 lakhs तक का जो अमाउंट है आपका सेविंग्स अकाउंट में या फिर आरडिया एफडी में, सो इट कैलकुलेट्स द होल, लाइक आपका जो पैन कार्ड में जितने भी डिपॉजिट्स है, इट विल कैलकुलेट इट्स होल एंड वो उतना टोटल पे यू विल गेट द इंश्योरेंस. सो 5 लाख तक उतना पैसा इट इज सेफ. तो इट्स सेफ टू अज्यूम दैट अप टू 5 lakhs, or I won't say 5 lakhs, up to 4.5 lakhs you can keep it in your savings account if you want to. That will be a like bad decision, I won't do it, but that is like the limit. 5 lakh के ऊपर रहेगा, that is a strict no. Either shift your money to another bank account, because that limit is applicable to one bank only. So you can open another savings account and you can put your money there, and that will be, you can increase your insurance that way, or you can just invest it. And the last point I want to tell you is, in the savings account you earn an interest on it. So for example, if you have 100 rupees and at the end of the year you will earn 3.5%, so if you are in Kotak, so that is like 3.5 rupees. So this 3.5 rupees, this interest, not the principal amount, this interest is taxable. So if you choose the old tax regime, this is not applicable for new tax regime. If old tax regime, there are various deductions which are given to decrease your taxable income. So this will help you decrease your taxable income, and in a way, अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट जो फॉर एग्जांपल अब 5 to 7.5 lakhs के स्लैब में हो, तो दिस माइट हेल्प यू गेट इनटू दैट 2.5 to 5 lakhs का स्लैब, एंड आपका टैक्स बच जाएगा उतना. सो हाउ दिस वर्क्स? सो according to Income Tax Act Section 80 TTA, so total जितने भी आपके सेविंग्स अकाउंट है, like if you have 3 4 however how much, जितने भी आपके सेविंग्स अकाउंट है, जो टोटल इंटरेस्ट यू अर्न अप टू 10,000, सो इतने जितने भी बैंक अकाउंट में से अगर आपका टोटल इंटरेस्ट इज स्टिल 10,000, so what you can do in ITR, you can mention it कि this you can mention it as income from other sources. So ITR में ये आप मेंशन करना पड़ेगा कि आपका इतना इतना इंटरेस्ट आपने कमाया, that is treated as an income, so income from other sources. And once you do that, then you can go down in deductions, and in a section 80 TTA you can claim a deduction of 10,000. अगर आप if you earn more interest in this, like for example 15,000 या 20,000, तो आपका 10,000 डिडक्ट हो जाएगा, which will be exempt from taxes, एंड उसके जो ऊपर का रहेगा फॉर एग्जाम्पल 5-10,000, उस पे ही आपको सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा. सो दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम. अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो दे डोंट हैव दिस डिडक्शंस एंड ऑल. सो यस, दिस इज ऑल आई वांटेड टू कवर, एंड hope you got a better understanding of the savings account here, and yeah, happy savings. Thank you.